Yeah. So we have just done basically. So L square is operating on YLM theta phi is equivalent to, or you can just write something like L into L plus 1 h cut square y lm theta phi, and this ylm is nothing but equivalent to your kit L and M kit element, है ना? And similarly Lz will operate on ylm theta phi is equal to mh cut. We have ylm theta phi, and obviously this can be also written as in a kit form. L square is going to operate on Lm. You will get L into L plus 1 h cut square L and M, and Lz is going to operate on Lm. We will get mh cut, and where we have L and M. Okay, this is the thing. And now this was and what is value of L? Here for the orbital angular momentum, L is equal to 0, 1, 2, 3. And we have already seen that M will be minus L2 plus L when we have calculated this particular the eigenstate of L square as well as Lz. And we are also interested into solve the nature of Lx and Ly. So why we have a L plus operator, and this L plus operator will operate on YLM theta phi. That value is equal to L into L plus 1 minus M into M plus 1 h cut, and you have YL M plus 1. यही था ना? Remember last class? And similarly, we have done it into kit form. So we have L plus LM will have L into L plus 1 minus M into M plus 1 h cut L and M. And we have also L plus L and L. That value is 0. So there is upper bounded level of M. That is. Sir, in the L plus, there will be M plus 1. हाँ sorry. यहाँ नहीं लिखा क्या? यहाँ तो कर दिया, यहाँ नहीं लिखा. That value is M plus 1. Good. Thank you. So now let's try to go for what? L minus. And yes, what is your L plus and L minus? L plus is equal to Lx plus I Ly, and L minus is equal to Lx minus I Ly. So we have all this information in our mind. Let's try to go for the commutation between L minus and Lz and L minus. Sorry, Lz and L minus. So let's try to go for this commutation. So we have Lz. What is L minus? That is Lx minus I Ly. So we have Lz, Lx, as well as minus sign, and I can also take outside Lz, Ly. So what is Lz, Lx? What is Lz, Lx? बताओ, ये सब तो कर चुके हैं ना? IH cross Ly. IH cut Ly minus I cut. Lz, Ly is what? Minus IH cut Lx. So what I can have, we can take H cut common, and we have Lx minus, ठीक है ना? So this will be minus plus I into I is, sorry, सही लिखा हूं मैं? Lx plus I Ly. Sorry. एक मिनट, आपकी आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है. Sorry, मैं क्या लिख रहा हूं? That value is equal to IH cut Ly, and this value is Lx IH cut. ठीक है या गलत है?
minus sign. So this will be minus sign. Sorry, minus minus plus I into I is minus. So this is your minus sign with IH cut or with H cut? With H cut minus sign आएगा. With H cut minus sign, yes. So what I can write? So this can be minus LX minus I LY into H cut, है ना? ऐसे लिख सकते हैं इसे? Yes, sir. Yes. So what you have? You have minus L minus and H cut. Okay, good. So this will be minus H cut L minus. Okay. So now we have to use this particular information and then we can apply both side LM kit. Same process जैसे last बार किया था. So we have to just use this one. And then we will discuss what is actually happening to our system and which type of physics we are revealing here. Okay, so just take this one. We have LZ. I am talking about this particular thing. So this is LZ L minus minus L minus LZ must be equal to minus H cut L minus. And what we have to do, we can apply L and M kit minus L minus LZ L and M kit, and this is equivalent to minus H cut L minus L and M kit. Yes. So what will happen? LZ is going to operate on this one. MH cut is there. So we have LZ L minus LM must be equal to M minus 1 H cut L minus LM. Yes. What is meaning of that? इसको क्या कह सकते हैं? So you have this particular information. So what will happen? M minus 1 H cut is also eigen value of LZ with eigenstate. That eigenstate is L minus LM. This is your eigenstate, isn't it? Now, this is situation. So can I write again that L minus LM is proportional to L M minus 1? लिख सकते क्या? Why? Because if you are operating LZ on L M minus 1, you will get M minus 1 H cut and you will get L M minus 1. So you can easily compare this thing. So this will be equivalent to this one. So yes, we can say this particular we can use this particular information. Yes, we cannot give guarantee that this is normalized or the magnitude of this will be magnitude of this, but we can just say that direction of this will be also direction of this. At least we can say. And how you will get the normalization part? So norms we can easily calculate. LM can be written as C minus L M minus 1. I had deliberately used C plus C minus due to this fact. Now what will be bra of this one? इसका bra लिखोगे तो क्या हो जाएगा? You have LM L plus is equal to C minus star, and you will take this thing that is L M minus 1. Okay. So this will be your bra part. Now, what we can do? We can easily multiply both things and we can get this number actually. And obviously this is orthonormal in nature. So we have to use this orthonormality relationship. So when we are using this particular orthonormal relationship, what we will get? So we have this one L M
L plus L minus L M is equal to, we have mod C square, we have L M minus 1, and we can remove this one, L M minus 1. So what is this value? ये value क्या हो जाएगा? 1. 1. So that value is 1. And now we have to go for L plus L minus. हमें किस में जाना पड़ेगा? L plus or L minus में. So when we will go for L plus and L minus, let's try to calculate what is value of L plus and L minus. This value is equal to 1. So what we have? We have L plus as Lx plus I Ly into Lx minus I Ly. And when you are going to multiply it, you have Lx square, you have Ly square, you have minus I, Lx Ly, and you have plus I, Ly Lx, and you have Lx square plus Ly square. I can take minus sign common. Then this is nothing but the commutation of Lx and Ly. What is commutation of Lx and Ly? IH cut LZ. है ना? So what we have basically Lx square plus Ly square minus I, and this commutation is I H cut LZ. So I into I is minus sign, minus minus, this sign is what? Plus 1. So we have Lx square plus Ly square plus H cut LZ. This is equivalent to L plus L minus. L minus L plus क्या था? लास्ट वाले में क्या अंतर था? H का LZ क्या पहले माइनस है, माइनस साइन था. So always you Yes, will use this one. Okay? So ये आपको हमेशा पता होना चाहिए. So let's try to come to this side. So I can write Lx square plus Ly square as, so we have L plus L minus as, so इसको आप याद भी रख सकते हो, है ना? So this is your L square minus LZ square plus H cut LZ. And now we can get mod C minus square. This mod C minus square is equal to L into L plus 1 minus M square plus M into H cut square. And yes, if you want, you can write L into L plus 1 minus M into M minus 1 H cut square. Yes. Okay. So now you can see here again one very surprising thing. There must be minimum value of M. What should be that? M की वैल्यू अगर आप माइनस L रखोगे तो क्या होगा? Put M is equal to minus L. This will be plus. That will be minus L, minus 1. You can take minus sign. So ये पूरा का पूरा term क्या हो जाएगा? That value is 0. Isn't it? So here you can have M must be greater than or equal to minus L. And what you have L minus as L and M is equal to root under L into L plus 1 minus M into M minus 1 H cut L M minus 1, and you have L minus L minus L is equal to 0. Clear है ये? Everyone? Yes या no? या फिर चले गए सारे? yes sir. है ना? So now we have
just prepare all our tools. And once we have prepared all our tools, then we can easily analyze our angular momentum algebra and we can see which type of physics is there. But before that, let me give you the final expression. So L square Lm is equal to L into L plus 1 h cut square Lm, and you have Lz Lm is equal to mh cut Lm. You have L plus Lm is equal to root under L into L plus 1 minus m into m plus 1 h cut L m plus 1. We have L plus L and L must be equal to 0. You have L minus Lm is equal to L into L plus 1 minus m minus 1 h cut L m minus 1, and we have L minus L minus L must be equal to 0, and m can be between minus L to L, and delta m must be plus minus 1. Clear here? And what is value of L? L will be between 0, 1, 2, and so on. So now, what is this? किस तरह का operator है ये L minus and L plus? So this is resemble to your ladder. So why it is very popularly known as ladder operator. So let's try to see what is this particular ladder operator. Okay, and then we will see what is space quantization and all these things. Okay, so you remember this type of ladder? याद है? सीढ़ी ladder है ना? So this is your ladder, and in the ladder every step has same width, isn't it? So you have change such that everyone everywhere, okay? And this is your length of ladder. So it will depends how many steps are there, depends on what is its length. Because everywhere we will just fix the length, okay? Fix this particular conjugative difference of between these two things. So suppose this state is identified as L and M. So hence your length is fixed, so L is fixed. M can be changed. So this state can be written as L m plus 1, and this state can be written as L and m minus 1. What will happen when you will operate L plus? So when you will operate L plus, you will go here to here. And when you will operate L minus, you will go up to here to here. But when you will get the minimum value of L, you cannot go beyond that, isn't it? So this value is L minus L, and the maximum value will be, you have L plus L. So you cannot go beyond that, and you will not go beyond that. And how many steps are there, that will depends on what is the length. If your length is higher, then you have higher number of steps. If your length is lower, then you have lower number of steps. So here the degeneracy come into picture. For the given value of L, and if I am talking about the given value of L, I am talking about the given value of theta, because L will represent somehow with the theta. So for the given value of L, we have how many m? 2L plus 1 number of ket L and m. So we have one particular ket which length is something like this. So if I am talking about mod L, this mod L is nothing but root L into L plus 1 h cut.
So if I am talking about this sort of magnitude of L, how many possible vectors are there in a classical mechanics? Suppose I am going to fix the magnitude of this particular L, some vector L. How many vectors you can make there in a classical mechanics? बताइए कितने वेक्टर्स पॉसिबल हैं है क्लासिकल मैकेनिक्स में? Sir, infinite number. Infinite number of vectors. If you are going to fix the magnitude, you have infinite number of vector in a space, isn't it? Yes, sir. But look at what is going to happen here. So your theta will be between what? 0 to pi. है ना? L fix कर रहे हो, so your theta will be between 0 to pi. Infinite number of vectors you can represent. But in a quantum mechanics, if you are fixing the length, that means you are also going to fix the number of vectors. And how many vectors can be there? There are 2L plus 1 number of vectors, because M will be between minus L to plus L. For example, if we have L is equal to 1, then what are the possible kit? 1 and 1, 1 and 0, and 1 and minus 1. So we have only 3 possible kit. So if we have 3 possible kit and the magnitude is same, what is going to change? The direction of a vector is going to change because the M value is going to change. And let's say how it will resemble to space quantization. So let's try to go for space quantization. सर Hmm. ये 10 मतलब ये बता सकते प्लीज एक बार बताइए क्या बीच में इंटरनेट चला गया था मेरा? क्या है? ये अपने जो 1110 1 - 1 मैं बोल रहा हूँ L is equal to 1 के लिए कितने possible kit हैं? Okay. So there are 3 possible kit, है ना? So if you have L and M, so for the given value of L, how many possible kit is there? So there are 2L plus 1 number of kit are there. So suppose we are talking about L is equal to 1. That means we have 1 and 1 kit, 1 and 0 kit, 1 and minus 1 kit. So if we can represent it in a diagram, so this is my LZ, this is my Z direction. So we have 3 value of Z. So one is plus 1, another is 0, another is minus 1, and with the H cut, okay, minus 1 H cut, 0 H cut, and 1 H cut. And we have L is equal to 1 means the value of mod L is equal to L into L plus 1 root under H cut. That means root 2 H cut. So this is length. And the orientation of this length is something like this. So this will be your first vector. This can be your second vector. And this can be your third vector. And you can easily calculate this particular angle. This angle is theta 1. This angle is theta 2. And this angle is theta 3. And we can calculate the cos value of this theta. So what is your cos theta 1? 1 H cut by root 2 H cut. So, and that value is equal to, so theta 1 is equal to pi by 4. And what is your cos theta 2? Cos theta 2 is equal to 0 H cut by root 2 H cut. Then theta 2 is equal to pi by 2. And yes, cos theta 3 is equal to minus 1 H cut by root 2 H cut. So theta 3 is equal to 3 pi by 4. We are just measuring from this particular Z axis in a contour clockwise direction. And what is going to happen? This will just like precise over Z axis. Just this is your phi. Something like this is also, and this is also going to precise. This is also going to precise.
So there are, now you can see in a classical mechanics what is going to happen. If I am going to fix a vector, but I cannot fix the orientation. Sorry, if I am going to fix the magnitude of vector, it is not necessary that we can fix the orientation. There may be infinite number of vectors can be there for each and every orientation between theta is equal to 0 to pi. But here you can see, if we are going to fix the magnitude of a vector L, then what is going to happen? You can fix the orientation also. And only 3 value of angle, that is polar angle, angle with the z axis can be possible. And these 3 value can be easily calculated from your geometry. And so you can see, if your theta is itself discrete, not all possible value of theta is there, as in a classical mechanics. If theta is going to discrete, you can say your space, whatever the space you are talking about, if you are talking about the rotational symmetry or a spherical polar coordinate symmetry, then this theta is also going to quantized, and this is very famously known as what? Space quantization. Are you going to appreciate this one? सर यस, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम अगर कोई भी वेक्टर लिया तो हाँ, तो उस वेक्टर का कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है। मैग्नीट्यूड फिक्स करने से वेक्टर का थीटा थोड़ी चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड फिक्स करने से थीटा फिक्स हो जाता है क्या क्लासिकल मैकेनिक्स में? वही सोच रहे हैं। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। नहीं हो जाता है। अगर मैग्नीट्यूड आपको मैंने दे दिया तो ऐसे वैसे कितने वेक्टर बना सकते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में? इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हो, तो उसके इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल होंगे। हाँ, यस। यहाँ पर कितने वेक्टर पॉसिबल हो रहा है? एक ही वेक्टर और 3 वेक्टर पॉसिबल हो रहा है ना? हाँ, तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ L, हाउ मेनी वेक्टर्स आर पॉसिबल? 2L plus 1 number of vectors are possible, and every vector have one fixed orientation. Obviously वहां भी हर वेक्टर का एक फिक्स ओरिएंटेशन होगा, लेकिन उस मैग्नीट्यूड के आप कितने वेक्टर बना सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर। बट यहां पर क्या आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर बना सकते हो? नो। So means there your space is not quantized. You have fixed your magnitude, but that can we have any orientation between 0 to pi, if I am talking about theta value. But here you have a discrete orientation. Okay, so this is if I am talking about angular momentum algebra, if I am going to solve quantum mechanics in a spherical polar coordinate system, and we are just seeing this rotational symmetry, then yes, quantization is there, and this is the one. हाँ बताइए सर, ये आपने LZ का जो सर्कुलर दिखाया, ये क्या आपने दिखाया सर? क्या दिखाया है? LZ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता क्या? सेम एंगल पर एक वेक्टर। सर मतलब आपने ये L वेक्टर की जो थीटा 1 बना रहा है LZ के साथ, उसकी ओरिएंटेशन दिखा रहे हो ना? LZ की ये L वेक्टर है। L वेक्टर Z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो सिर्फ एक ही प्लेन में बनाएगा क्या? ओके सर, बट सर फिर इसकी तो फिर वही चीज होगी जैसे हमने कहा कि क्लासिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेक्टर की, तो अगर इसके साथ भी तो फिर चेंज मतलब हो रही है। एक मिनट पहले सोचो समझो फिर बात करो। बात ये है, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ये एक वेक्टर है, ये एंगल मैंने फिक्स कर लिया थीटा, तो ये यहां से नहीं हो सकता फिक्स थीटा। जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है ना, वो सिर्फ इसी प्लेन पर है क्या? नहीं सर, दैट इज ओके।
But sir, like it is rotating also na about the z axis. हाँ रोटेट कर रहा है, तो फाई तो रोटेशन को ही तो बता रहा है. With the theta one, yes. So then it is also changing its direction also na. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? थीटा एंगल तो फिक्स है ना भाई, यहां पर रहे, यहां पर रहे, यहां पर रहे, थीटा एंगल तो फिक्स ही है. वो तो थीटा आप तो एम की बात कर रहे हो भाई, ओके ये सर. थीटा एंगल तो फिक्स है ना, यस सर, ये तो फिक्स है. या फिर वो थीटा चेंज हो जा रहा है? सर नहीं, थीटा फिक्स है तो अभी, मैं मतलब वो चीज तो हमने मैं कही और ना कि किस चीज के बारे में डायरेक्शन. बात कर रहा हूं? मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? ओके सर. मैं तो यही कह रहा हूं ना कि ये थीटा फिक्स है. यस सर. ये यहां रहे या यहां पर रहे या यहां रहे फिर यहां रहे, ये थीटा तो फिक्स ही है ना आपका. यस सर. तो मैं और क्या बात कर रहा हूं? नहीं सर, वो डायरेक्शन आपने यूज किया ना कि हाँ, क्लासिकल में डायरेक्शन चेंज होता है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड चाहे सेम रखते हैं. तो इसमें आपने मतलब ये चीज थी कि इसमें अगर मैग्नीट्यूड सेम रखते तो डायरेक्शन सिर्फ अरे 3 बाबा, लेनी. मेरा ये कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम रहने के बाद आप सेम मैग्नीट्यूड वाले इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में. यहां पर आप फिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर ही बना सकते हो. ये क्लियर है? यस सर. 3 vectors are possible with the theta 1, theta 2 and theta 3. थीटा 3 एग्जैक्टली. अब वो थीटा 1 जो है किसी एक प्लेन में थोड़ी है. Yes sir, that is rotating about the LZ axis. अबाउट द एलजेड एक्सिस. Yes sir. क्लियर है ये? Yes sir. ओके. चलो चलिए. सो अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना? सो अब आपको जहां भी यूज करना होगा, जब भी आप एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करोगे? स्फेरिकल पोलर. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने सारा रिजल्ट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में निकाल कर रखा हुआ. ये सारा जो आपके पास अलजेब्रा आ रहा है, दे आर फॉर अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स गो फॉर some basic problem. So psi xy is given, let's say x plus iy. Suppose यही है, psi xy is given x plus iy. So if Lz is measured, what will be eigenvalue? Question क्या है? If Lz is measured, what will be eigenvalue? So पहला काम क्या करना होगा? एक्स और वाई को स्फेरिकल पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाओगे. तो जैसे ही आप x और y को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाओगे, x is equal to what? r sin theta cos phi. Y is equal to what? r sin theta sin phi. So this psi, theta and phi is equal to, x की वैल्यू पुट कीजिए तो r sin theta बाहर आ जाएगा, and you have cos phi plus I sin phi. इसे आप क्या लिख सकते हो? Is to I e to the power I phi. I So your psi theta phi is some r sin theta e to the power I phi. Now Lz के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? क्या इसकी कोई रोल है क्या? नो सर. Lz के लिए इसका कोई रोल है क्या? नो. नहीं. नो नहीं. सर. इसका कोई रोल है क्या? यस सर, फाई का रोल है. फाई का रोल है, e to the power I phi. So e to the power I phi is what? Eigenstate of Lz? यस सर. Yes. What is value of m here? 1. 1. So what will be eigenvalue? 1 is cut. 1 h cut. So eigenvalue is 1 h cut. अब सपोज करो यहां -2 दे दे तो क्या होगा?
तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी -2, है ना, और यहां भी -2 हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, -2, एंड दिस विल बी -2i phi। सो व्हाट विल बी योर नाउ मेजरमेंट, m की वैल्यू क्या होगा, -2h कट। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम अगर इवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी दिया हुआ हो, तो आप पहला काम क्या करोगे, यू विल जस्ट गो फॉर व्हाट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप जैसे ही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जाओगे, अगर एलजेड की बात है, देन यू विल सी, यू विल ट्राई टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन टर्म ऑफ e टू द पावर i phi। किस टर्म में लिखने की कोशिश करोगे, e टू द पावर i m phi, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, and then you can easily say that in this case what will be eigenvalue for LZ, -2h cut। ठीक है, ओके। पहले आज कुछ आसान क्वेश्चन ही करते हैं, and then we will go for tough question also। So suppose your psi is given by cos 2 phi, some constant a। So your psi is cos 2 phi। If LZ is going to measure it, what will be measurement? सर 2h का और -2h का। Very good। क्यों? Because cos 2 phi is not a eigenstate of LZ। Yes, LZ को जैसे ही इस पर ऑपरेट करोगे sin 2 phi हो जाएगा। But yes, this can be written a e to the power i2 phi plus e to the power -i2 phi। And obviously by 2 आप रख सकते हो। So now your LZ is measured। So if LZ is measured to this one, what will be measurement? 2h cut। And if LZ is measured on this one, what will be measurement? -2h का। -2h cut। Okay, so here answer will be 2h cut and -2h cut। Clear है ये? So this is just a warm up question, है ना, जस्ट आगे की क्लास की तैयारी के लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखना है। नाउ अगर L स्क्वायर के लिए देखोगे तो किसे देखोगे, अगर L स्क्वायर के लिए देखना है तो किसे देखोगे, किस फंक्शन को देखना होगा आपको, बताइए। फॉर द L स्क्वायर किस फंक्शन को देखना होगा, एनीवन? फाइव को ही देखना पड़ेगा। L स्क्वायर के लिए भी फाई को देखना होगा। वेरी गुड, यही पढ़ा अभी तक। जब आपने L स्क्वायर को सॉल्व किया था तो क्या किया था, जब आपने L स्क्वायर को सॉल्व किया था तो क्या किया था, तो थीटा फाई थीटा दोनों एंड फाई का। थीटा एंड फाई दोनों था। अब पूरे के पूरे इक्वेशन को आपने किस टर्म में फाइनली सॉल्व किया था, लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन में। फाइनली जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया था वो किसका फंक्शन था, फाई का फंक्शन था क्या? सर थीटा और फाई दोनों का था। अरे नो सर, ओनली थीटा का था सर। थीटा का था सर, एसोसिएट लीजेंड। भाई जो वो आपने पूरा सॉल्व किया था e टू दी पावर i m फाई को तो बाहर ले लिया था, वो कैंसिल हो गया था सर दोनों और तरफ। पूरा का पूरा इक्वेशन किसका इक्वेशन मिला था, थीटा के टर्म्स। थीटा, थीटा का फंक्शन मिला था। वही Yes. तो हमने पुट किया था, x की वैल्यू cos थीटा, बिना पढ़े हुए आते हो क्लास में ना, x की वैल्यू cos थीटा पुट किया था, और फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किसके टर्म में आया था, x के टर्म में आया था।
यस सर, एफएक्स के टर्म में आया था। आया Yes, sir. था कुछ इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी Yes. स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मिला था ये। यस सर। तो ये Yes, x sir. किसका फंक्शन था? थीटा का। थीटा का फंक्शन था। तो ये f किसका, तो ये जो fx है ये किसका फंक्शन था? थीटा का। थीटा का फंक्शन था। तो जब आप एल स्क्वायर के टर्म को देखोगे तो किसे देखोगे, फाई को देखोगे या थीटा को देखोगे? थीटा को। थीटा को देखोगे। और मैंने आपको स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी लिखवाया था यस सर। y11 y10 y00 लिखवाया था या नहीं? Yes, sir. यस, तो उसमें थीटा का पार्ट था। Yes, sir. यस, सो वेन एवर यू हैव कॉस थीटा और साइन थीटा, एल की वैल्यू क्या होगी? L1. एल की वैल्यू 1 होगी, है ना। एंड वेन एवर यू हैव कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस 2 थीटा, तो एल की वैल्यू क्या होगी? 2। ओके, सो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू सी द एल स्क्वायर, then theta part is always there, and when you want to see that LZ, then phi part should be there, और e to the power I m phi को आपको देखना है, और थीटा वाले के लिए आपको लेजेंडर पॉलिनोमियल्स को देखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Then you can analyze all these things. So please revise first and then come to the next class. Okay? So next class में हम लोग different types के problems करने की कोशिश करेंगे। So please revise it. बिना रिवाइज किए हुए क्लास में आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? If you will not revise it, I will stop quantum mechanics class फिर, ठीक है? So revise each and everything, है ना? So next class में देखते हैं क्या है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बिना रिवाइज किए आते हो, वेरी बैड। कुछ भी नहीं देख कर आते हो, कुछ भी नहीं, है ना? कोई फायदा नहीं है इससे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।